Hello, good afternoon, everyone. How are you all? कैसे हैं आप सब? Great. That's good. All right. So I'm absolutely fine, Shubha. Thank you. So I have received the answers of most of your students. Okay, give me 2 days of time. By Saturday, I'll evaluate your answers and we'll get back. All right. Chalo. So any question? So how is the preparation going on? Sir, Yes, Kanchi. sir, could you explain that why China became more successful, as you explained yesterday also, but I am not that much clear in that thing. Okay, no issue. I'll explain the same thing again. See, both India and China, both countries got the independence at the same time almost. Okay, and both the countries, because initially it was the USSR who for the first time introduced the concept of planning, 5-year plan actually. Just a minute, let me take this. Okay, so it was USSR who for the first time come up with this concept, and both India and China both started following the same thing, right? But the thing is what? China continue with one policy. Okay, China till the 1970s, China continue with the path, continue following the agriculture sector. Okay, China basically continue making things, making policies in favor of the agriculture. Why they continue with it? Because the China first of all wanted to strengthen their core, okay, core areas. Till 1970s, I'm telling you, okay, till 1970s, China followed that particular concept. China gave enough impetus in order to promote or in order to protect their core areas or to strengthen that. But on the other hand, what India was doing? India, in the first 5-year plan, India simply focused on the development of agriculture sector, right? So that is the main thing that India did in the first 5-year plan. Then what India did in the second 5-year plan? In the second 5-year plan, India simply followed the industrial growth. We started following the growth related to the industrial sector. Then again, the third 5-year plan comes in. So again, our policy shifted, and India was also following back-to-back setbacks. There was no that much setbacks, as India was facing. Jitna setbacks India faced kar raha tha, China was not facing that much setbacks, right? So China, they were in a proper position, they were in a proper effort in order to control their thing, in order to control their interest or to protect their interest. But as there were domestic and international factors were so dominant over Indian economic policies that we were not able to do any sort of things. But China was not facing any sort of political pressure or any sort of international pressure or anything in that particular matter. Okay, so China was not having that such issue, but India was having that such issues. Okay, so that is the thing. What is why here, Kanchi? Because see, India is a democratic state, okay, whereas China is not. This is the first thing. हमारा देश क्या है? एक लोकतांत्रिक है ना? आज भी हमारे फार्मर्स लोग गए हैं ना प्रोटेस्ट करने के लिए, कोई उनको रोक सकता है? No one can stop them, right? People have right to protest, which is enshrined under article. Which article? Right to protest is enshrined under which article of the Constitution? बताइए. आर्टिकल 19 पढ़े हो? बताइए. मौनी लोग फिर से मौन व्रत पे चले गए. मौन व्रत पे मत जाया करो.
है ना, रिप्लाई वगैरह कर दिया करो। चलिए, सो आर्टिकल 19 क्या गारंटी करता है? आर्टिकल 19 गारंटी हमारा करता है दैट देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चलो अब जाकर के बोलते हैं, आप लोग को जब तक पंच न दिया जाए, जब तक एनर्जी देना पड़ता है, बूस्ट, है ना। क्लास में आइए, पहले बूस्ट लीजिए, उसके बाद क्लास अटेंड करिए, देन यू विल पार्टिसिपेट। ऐसा क्यों करते हो ये भी तो बता दो। You are having lunch, okay, no issue, you can, ठीक है। चलो, so this was the thing, okay, ये एक चीज थी जिसकी वजह से चाइना आगे गया, ठीक है कांची। चलो, कल हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था? बताओ तो। एंड सेकंड वाज आइडियोलॉजी, एब्सोल्युटली कांची, है ना, फिफ्थ आइडिया। Are we done with your the rolling plan? Have we completed that? Okay. Chalo, who will explain about the rolling plan? बताइए। Yes, Janvi, you please explain. What do you understand by rolling plan? So, sir, the fifth 5-year plan was during the period 1974 to 79. It was Indira Gandhi's government. No, sir. Yeah, you are. Okay, in between, that government was toppled and Morarji Desai's government replaced that. And so Morarji Desai actually decided to replace Indira Gandhi's 5-year plan with his plan, which was called the rolling plan. It was from the year 1978 to 83. However, that was just the plan, and it could only be there for like a year, because then again Indira Gandhi's government was back, and she decided to continue with her original plan and for the last remaining year as well, and which focused on Garibi Hatao and problem of poverty. Yeah, true. Okay, so this is the thing, that the 5-year plan was cut short, okay, by the Morarji Desai and government, and when the Morarji Desai government got replaced by the Indira Gandhi government, then Indira Gandhi again restored the same, okay, by cutting short the 5-year plan introduced by the Morarji Desai government, that was from 1978 to 1983. Okay, so this is the thing related to it. Now, so this was the fifth 5-year plan. Guys, fifth 5-year plan is very much important from your examination point of view, because there are a lot of questions that can be raised, that can be asked basically from your fifth 5-year plan. Okay, so anyone having any doubt till now, so feel free to ask. बताइए, किसी को अगर कोई डाउट है तो। Sir. Also, one thing to ask, sir, when Indira Gandhi came again in the party, so in 1980, right? So then she started his new plan, new 5-year plan. When Indira Gandhi government came into picture, no? So she simply scrapped. She wanted to complete the 5-year plan. Okay, that was the fifth 5-year plan, right? So she that started. Okay, means so in 1980 she has started new 5-year plan, like 1980 Definitely. to 85. That was sixth 5-year plan. Okay, so clear. Okay, sure. So let's discuss about the sixth 5-year plan. Okay, now as we have discussed that for every plan there is the main focus area, the core area, the essential area that we call. Okay, so we have the core area, we have essential area for each and every plan that we are studying. So what is the core area of sixth 5-year plan? ये हमारा sixth 5-year plan का core area क्या है? So the core focus is on increasing the national income of the country. हमारे देश का क्या increase करना है? National income. तो सिंधुजा, you please explain me that how you calculate the national income.
Yeah, we Yes. calculate the national income using the GDP. GDP. By using GDP, you calculate the national income. Damini, can you please explain? Yes, Damini Patel. Okay, Chatra. Chatra, can you explain? Kanchi? Yes, sir. Yes. How you calculate the national income? So while calculating GDP only, gross domestic product. National income is calculated at NNP at factor cost. Okay, I'm talking about national income. Okay, if the word national comes, then what do you understand by national? Those who are Indians, isn't it? Matlab income earned by the Indians. Okay, so here the NNP is called as NNP at the factor cost. If you calculate the NNP at factor cost, then you will come to know about the national income, that this is our national income. Okay, ye clear hua? And how you will get the NNP at factor cost? So in order to get the NNP, so you have to simply subtract what? GNP with depreciation, right? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको GNP में किस चीज को subtract करना पड़ेगा? You have to subtract depreciation from GNP. Then only you will be able to calculate this particular thing. ये clear हुआ? बताओ. Is this clear to all? Okay. चलो. So our 6 5-year plan, our 6 5-year plan basically focuses on increasing the national income of the country, right? So this is the first thing. What was the second thing? For the second perspective, our 6 5-year plan focuses mainly on the modernizing our equipments. ठीक, हमारा जो भी इक्विपमेंट्स था, हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे उन इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज करना. Now the question arises, why we were focusing on modernizing our technology, modernizing, giving special focus, special importance regarding the modernization of technology. What was the purpose behind this particular thing? Batao. What was the purpose behind this? Why we wanted to focus more on that particular thing, not on any other perspective, but specially emphasized? For increasing production. Yes, that was one of the reasons. Now see, if we are talking about the modernization, so please do not consider the modernization only related to any specific thing. Okay, only related to any specific sector. Modernization has a bigger connotation. ठीक है, इसका ना एक बहुत ही बड़ा कोनोटेशन है. इसको इतने हल्के में मत लो, इतने छोटे पे मत समझो. ठीक है, बहुत ही बड़ा कोनोटेशन है हमारा इस चीज का. ठीक है, अब देखो हमारा ये मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस करने के पीछे दो मेन रीजन थे. वी वर हैविंग टू मेन रीजंस बिहाइंड फोकसिंग ऑन मॉडर्नाइजेशन. सो व्हाट वाज दोस मेन रीजंस? ठीक है, वो मेन रीजन क्या था? तो पहला मेन रीजन हमारा ये था, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड राजीव गांधी गवर्नमेंट वाज देयर. राजीव गांधी गवर्नमेंट, नो नॉट ही वाज नॉट देयर, बट राजीव गांधी वाज देयर. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राहुल गांधी, आई एम टॉकिंग अबाउट राजीव गांधी. ठीक, तो राजीव गांधी थे हमारे. सो राजीव गांधी वाज वेरी मच यंग. और यंग आप लोगों को एक दिन अगर व्हाट्सएप ना चलाने को मिले तो क्या आप लोग रह पाओगे एक दिन में ना व्हाट्सएप चलाए हुए? बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू विल सर्वाइव विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? सर्वाइव, यू ऑल विल सर्वाइव. Yeah, that is very good then. That is very much commendable. If you all will survive,
देन इससे अच्छा और क्या हो सकता है बताओ? इससे अच्छा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता इससे अच्छा। ठीक है, सो ओके, या आई गॉट इट। एग्जाम कल होकर के रहेगा तभी जाकर के सोशल मीडिया यूज नहीं करोगे, नहीं तो फिर कि कैसे ही रुकना और क्यों ही रुकना, तुरंत से एकदम में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब देखो, तो एक तो राजीव गांधी गवर्नमेंट थे, दूसरा हमारा क्या था, 1975 में हमारा कुछ हुआ था, बताओ क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? उससे पहले भी बोल सकते हो, मतलब 70s में कुछ हुआ था, 70s के दौर में। Emergency was there. Okay, so what is the thing related to emergency? Why you will focus on modernization especially? आर्मी, वेरी गुड कांची। ठीक है, हमें किस चीज पे फोकस करनी थी? आर्मी पे। क्यों? क्योंकि हमारा एक और चीज हुआ था ना, वॉर, है ना। वी ऑल्सो हैड वॉर। हमने क्या चीज फेस किया था? हमने वॉर भी फेस किया था, और वो भी अच्छा खासा वॉर हमने फेस किया था। ओके, तो वी वर आल्सो फोकसिंग ऑन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। डू यू रिमेंबर दैट ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया एंड इस्रान, बोथ द कंट्रीज were the good friend, okay, but no one was aware about their friendship, so everything was in the private, everything was behind the secret door, okay, and वो पूरा एकदम हवा ही हो गया, वो पूरा एकदम धुआं ही हो गया। ठीक है, वो प्लान जो था हमारा। So this is the thing, okay, so these were the two things that why we focused more on developing technology। ठीक, तो ये चीज पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस हो गया था। We also wanted to reduce the poverty, because see, without poverty reduction you won't be able to develop yourself fully। अब एक बात बताओ ना, आपके फैमिली, आप लोग गरीब, ठीक है, गरीब अगर है और भी अगर बच्चे आते हैं आपके घर में, ठीक है, एक तो पहले से आप गरीब हो, फिर और बच्चों को आप इनवाइट कर लो, मतलब और बच्चे आ रहे हैं आपके आपके पास रहने के लिए आपके साथ, ठीक है, तो फिर और भी ज्यादा गरीबी हो जाएगी। तो गरीबी एंड पॉपुलेशन बोथ आर द ट्विन थिंग्स। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी चीजें क्या है, काफी ज्यादा ट्विन से और काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है अगर वो दोनों आते थे। ठीक है, चलिए, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वाज देयर। ओके, देन इंश्योरिंग कंटिन्यूअस डिक्लेयर, poverty पे हमारा continuous effort was there, the government wanted to ensure that no stone should be left unturned, so we have to do all the necessary things in order to go for the eradication of poverty। ठीक है, जो भी हमारा था हमने सारी ताकतें झोंक दी थी कि नहीं भैया पॉवर्टी को तो हम हटा के रहेंगे, बट दिस इज इंडिया, वी बिलीव इन बिकमिंग पुअर, वी एक्चुअली एडमायर बिकमिंग पुअर, ओके, सो वी रिमेन्ड पुअर। तो ये था हमारा। ठीक, तो बट द थिंग इज व्हाट दैट even though there were various things in the second 5-year plan, sorry, in your very much 6th 5-year plan, बहुत ही चीजें थी हमारे पास 6th 5-year plan में, negative also, there were the few negative things also in the 6th 5-year plan, but there are good things also। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास अच्छी चीजें भी है, और वो अच्छी चीजें क्या है, What is that अच्छी चीजें related to it? Okay, हम लोग बोलते थे that do not release, हम लोग simply we used to say that do not just now ना, अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं कि डेटा वगैरह रिलीज मत करो, उस टाइम भी कहते थे that do not release the data otherwise the things will get down, okay, everything will be in the problem, but and people were also in the fear because of the emergency, because they witnessed that during the time of the emergency no one was spared, even the Jayaprakash Narayan who fought the war of independence with Mahatma Gandhi, even he was jailed। okay, thank you so much, तुम ही हो रामबाण लेके आते हो। चलिए, so दिस इज द थिंग रिलेटेड टू इट। तो ये सारी चीजों से हमें बचाना था। मेन तो पॉवर्टी एलिवेशन पे हमारा
फोकस तो था ही इस चीज पे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी, और कुछ अच्छी चीजें भी थे, ठीक है। तो बिकॉज यू नो व्हाट वाज द गुड थिंग रिलेटेड, तो उससे कुछ साल पहले ही हमारा स्टार्ट हुआ था पॉपुलेशन कंट्रोल का, एंड गवर्नमेंट आल्सो वांटेड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, एंड रिमेंबर वन थिंग गाइस, that 6 5-year plan is also famous for your third industrial revolution, ठीक। and what is third industrial revolution, क्या है तीसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बताओ। अभी तक कितने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए हैं? हम ब्लॉक, बताइए कौन कौन से। यस कांची, पता है बाकी सब लोगों को? यार आज मुझे बता ही दो, आप लोग इतना शांत शांत क्यों रहते, क्यों नहीं बोलते हो? कोई भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जब मैं बोलता हूं तब जाकर के बोलते हो। क्वेश्चन क्वेश्चन बताइए, कोई चैत्रा को क्वेश्चन क्या है? चलो आज आप लोग इस राज से पर्दाफाश कर ही दो, है ना। बताइए। मृगांका, एम आई ऑडिबल टू यू? मृगांका, so Mriganka, I have not received your answer. और यदि आप लोग ना सॉरी वॉरी मत बोला करो, थोड़ा कितना रुलाओगे ना, इतना सॉरी बोल दिया तुम लोगों ने कि आंखों में आंसू आ जाए। मृगांका आप भी आंसर भेज देना, अपने आप के नहीं आए अभी तक। देखो सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो हुआ था 17th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक। किस चीज में हुआ था? ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हाँ मृगांका बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही मृगांका सही से। Sir, I have already sent the answers yesterday. Okay, you have sent your answers. All right, Mriganka, I'll check it. ठीक है, मैं चेक कर लूंगा सबके। तो 17th सेंचुरी के करीब हमारी आई थी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इस चीज में आया था रेवोल्यूशन। अच्छा सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्म? रेवोल्यूशन से आप समझते क्या? एंड व्हाट इज रिफॉर्म? रिफॉर्म बताइए। To improve something. Yeah, that takes time. Absolutely, absolutely correct. यार आप लोग तो जीनियस हो, कौन से चक्की का आटा खाते हो? सारी चीजें पता होती है तुम लोग को। तो 17th सेंचुरी में हमारा आया था इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रिवॉल्यूशन। देन वी हैव द ग्रेट यू नो थिंग हमारे पास। फिर ग्रेट चीजें आई थी 18th सेंचुरी में। इन 18th सेंचुरी that was actually industrial revolution, है ना। दिस वाज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हमारा आया था 18th सेंचुरी में। सो इन द दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज रिलेटेड टू कोल एंड स्टीम इंजन, ठीक। ठीक बा,
तो ये हमारा था कोल और स्टील इंजन से रिलेटेड. सो दिस वाज द थर्ड. देन this was the second. Then third industrial revolution came into picture in the 20th century. That was in the era of 1980s. In India also it came. Okay, and the third industrial revolution was related to information, communication and technology. ठीक है, ये तीन चीजों से ये तीसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था हमारा. फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन केम इन 21st century that we are having, that we are currently undergoing. Okay, and this 21st century is related to what? This 21st century is related to your this artificial intelligence, STEM engine, stem cell, basically the development related to the stem cell. What do you understand by stem cell development? Yes, obviously, Kanchi, in the world, स्टेम सेल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या सुनते हैं? अच्छा, आप लोग में से कितने लोग का बायोलॉजी है? बायोलॉजी पढ़ा है आप लोगों ने? टिल 10th. फिर कैसे होगा? उसके बाद कभी नहीं पढ़ा? चलिए, एक आप लोग सीरियल देखे हो शाकालाका बूम बूम? देखा है आप लोगों ने? क्या होता था उसमें शाकालाका बूम बूम में? जादुई पेंसिल थी ना, मतलब कुछ भी बनाओ तो बन जाती थी. बचपन में तुम लोग भी सोचते होगे कि काश मैं मेरे पास भी ये पेंसिल आ जाए तो मैं ये चीज ड्रॉ करने से आ जाएगा मेरे पास. सोचते थे ऐसा? नहीं. ओके, यू यूज दैट एज अ टॉय. हाँ, definitely. So similarly, what stem cell can do? Stem cell can add your things. Okay, suppose that आपका कोई पार्ट कट गया, कोई पार्ट में दिक्कत आ गई, तो स्टेम सेल उसको क्या करता है? रिपेयर कर देता है. स्टेम सेल उसको जोड़ देता है, नया बना देता है. ठीक है. On the other hand, we have the concept under the artificial intelligence. Also, we have the concept of 3D printing. मतलब 3D प्रिंटिंग से मतलब क्या होता है? What do you understand by 3D printer? 3D printer का मतलब सिंपली होता है, it simply says that whatever thing that you want to create, you can simply create it. आप उससे क्या कर सकते हो? उसमें मटेरियल फिट कर दो, वो वैसी तरीके से बन के आ जाएगा. अभी देखो, if you have to take the printout, if you have to take the hard copy of any particular thing that you have made, तो वो हार्ड कॉपी में निकल करके आएगा ना, उसे जो आप प्रिंट करोगे तो. लेकिन 3D प्रिंटिंग में क्या होगा? आप सिंपली डिजाइन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन योर कंप्यूटर, अटैच इट विद द 3D प्रिंटर and then make whatever you want to make. Okay, that's why the 3D printer, okay, is banned at airports. 3D printers are banned at metro stations. So this is the okay, so this is the latest technology. 3D printer का एक तरीके का साकाला का बूम बूम, जो चाहो वो चीज, वो मर्जी वो क्रिएट कर लो. ठीक है, तो वो चीज आ जाएगी. ठीक. सो दिस इज द थिंग रिलेटेड टू इट. ओके, तो ये हमारा अभी चल रहा है करंट फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. या वी हैव 3D प्रिंटर. सिंधुजा, सॉरी कांची, आपने ये पूछा. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. सो दिस पर्टिकुलर आवर 6 5-year plan was basically it mainly focused on the modernization. ठीक है, इस वजह से इसने ये मॉडर्नाइजेशन पे बहुत ज्यादा हमारा फोकस किया था. ठीक. सो दिस इज द थिंग. एंड the 6 5-year plan was successful also. हमारा काफी सक्सेसफुल रहा था हमारा 6 5-year plan. ऑलराइट, वहां पे किसी को कोई दिक्कत? Is this clear? Is the 6 5-year plan clear to all? That how we developed, and it was a sort of successful thing. Okay, even though we faced one challenge in the 6 5-year plan also. So what was the challenge in the 6 5-year plan? Can anyone relate?
क्या बाकी के लोग रिलेट कर सकते? व्हाट वाज द चैलेंज? बताइए क्या हुआ था ऐसा ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड? वेरी क्लेवर, हाँ? मुझे अब पीपीटी को हटा देना पड़ेगा. यस, challenge was famine. Famine was there undoubtedly. Okay, so as the famine, as we were having the famine, so due to famine we faced the food shortage. ठीक, अब से रुको, मैं काम करूंगा. मैं अच्छा एक बात बताऊं, मैं कैन आई यूज ब्लैंक पीपीटी? आपको पीपीटी की देखने की जरूरत पड़ती है क्या? बताइए लेक्चर के टाइम पे. नहीं पड़ती ना? सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते होंगे सब लोग. ओके कांची, सो यू गाइस डू द चीटिंग, हाँ? आई वाज हैविंग द इंप्रेशन कि नहीं, आप लोग अपने ईमानदारी से लिखते हो, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि चीटर भी हो, चीटिंग भी करते हो. अभी से करप्शन? अरे रुक जाओ, आईएएस बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, यूपी कैडर लेना, फिर करप्शन करते रहना, है ना? तो लेकिन नहीं, अभी से ही करना है इनको करप्शन. ठीक है, ईमानदारी से लिखते हो. अच्छा, हाँ, अब से मैं from now onwards I'll use the blank slide. Okay, so there I'll try to explain all those things to you guys. ठीक है, वहां पे because you know in a blank sheet ना I'll get enough space to write. यहाँ पे मुझे ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है अपनी कलाकारी दिखाने का. ठीक है, आई एम अ गुड पेंटर, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट. ठीक है, तो मैं वहां पे अपनी कलाकारी दिखा सकता हूँ, ग्राफ बना सकता हूँ. आई कैन मेक ग्राफ, आई विल मेक मैप देयर, है ना? यहाँ पे बन नहीं पाता है क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखूं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास से यही करूंगा, क्योंकि मैंने पिछले बैच में, अभी तक मैंने जितने भी बैचेस में पढ़ाए हैं सबको प्लेन पीपीटी पे ही पढ़ाया है. ठीक है, सो दिस वाज द थिंग रिलेटेड टू द 6th 5-year plan. Okay, so overall our 6th 5-year plan was a successful attempt. ठीक है, हमारा 6th 5-year plan क्या था? काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था. ठीक, कुछ ही 5-year plan तो है जो हमारे सक्सेसफुल रहे. अरे एब्सोल्युटली नो, व्हाई वुड आई वांट. ठीक है, चीटिंग तो आप लोग को करना ही नहीं है ना काच? चलिए, अब एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सावन नॉन वेजिटेरियन है? आप लोगों में से हाउ मेनी ऑफ यू आर? यू, ओके, गुड. यू आर नॉट दामिनी, व्हाई? प्योर नॉन वेजिटेरियन, एब्सोल्युटली गुड. जानिए, ऐसा ही होना चाहिए इंसान को. वो इंसान ही क्या जो नॉन वेज ना खाए. Rest of the people are simply, you know, the skeleton, not human being. They don't have emotion. Okay, those who don't eat non-veg na, so they don't have emotion. So कल से शायद सावन वावन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों में से कोई है जो बिलीव करते हैं इन सारी चीजों में? जो नहीं खाना है, तो अगर आप बिलीव करते हो, चलो वेरी गुड, तो कोई बात नहीं. यू हैव 2 days टाइम जानवी, पूरे रात आज दबा के खाना. ठीक है, क्योंकि कल से फिर 1 महीने तक खाने को नहीं मिलेगा. सो हाँ ठीक है, थर्सडे है, थर्सडे में बिलीव करते हो, चलो 1-2 दिन चल जाता है. अब कल से तो सावन स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या करोगे फिर, है ना? फिर तो कुछ कर नहीं सकते. ठीक, चलिए, सो लेट्स डिस्कस अबाउट 7th 5-year plan. ठीक है, अब अपन 7th 5-year plan डिस्कस कर लेते हैं. चलिए, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग को पुराने टॉपिक्स पे किसी भी चीज की रिवीजन की जरूरत है? बताओ, रिवीजन किए हो खुद से? पढ़ाई किए हो खुद से?
बहुत टाइम हो गया. I believe I have not asked you regarding your preparation. So have you guys made your preparation? Sorry, have you guys made your study plan? बन गया है, फॉलो हो रहा है? बताइए, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है? Is there any problem that you are facing? हर रोज क्या प्रॉब्लम है चैत्रा, बताइए. What's the problem? सब चीजों की प्लानिंग क्यों कर, कॉलेज वगैरह? ओके. क्या सी आप लोगों को क्या बनना है? यू गाइज आर सपोज टू बिकम द ब्यूरोक्रेट आईएएस ऑफिसर, है ना? सो ऑन अ डेली, तो अभी से आप लोग मान लो कि आप अभी से आईएएस बन चुके हो, ठीक है? आपको इस चीज में अभी से ही बिलीव कर लेना है, ठीक है? तो अब देखिए फिर होता क्या है. सो द थिंग इज व्हाट, if you will believe that you are an IAS officer, then you will realize that yes, there are a lot of things that an IAS officer do on a daily basis. बहुत सारे challenges आते हैं, बहुत सारे problems आते हैं. अभी आपको पता है, you guys are at your golden phase. जब आप एक बार IAS बन जाओगे ना, फिर रोते रहोगे, ठीक है? You know, one of my friend, he is currently posted as the DM of सबरीवाला. अभी शायद उसका ट्रांसफर हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बहुत दिन से बातें नहीं हुई है. तो सबरीवाला में पोस्टेड है. आई मेट हिम इन द ईयर 2019, ठीक है? उस टाइम पे ही हुआ था DM डे, नॉट यस 2019. लॉकडाउन उस टाइम पे नहीं लगा था. हाँ, सबरीवाला, ठीक है? तो ही वाज द DM डे. तो ही वाज क्राइंग, लिटरली ही वाज लाइक क्राइंग. ओके, हाँ, definitely these are the subjective thing, absolutely Janvi, you, but I am just sharing the experience that you are literally crying. यार इतना ज्यादा काम होता है, छुट्टी नहीं मिलते हैं, and if you are honest ना, then you will face lot of challenges, ठीक है? अगर आप honest अगर रहते हो, then you will have lot of challenges. If you are not ethically that much sound, then तो कुछ बात ही नहीं है. But if you are ethically, morally strong, then you will face little bit of challenges in the system. Hey, so he is ethically, morally, and all those things very good. So this is the thing. So he was thinking of quitting the civil services. There are a lot of people, there are a lot of selected candidates who quit their civil services and they join the private institutions. बहुत लोग टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को. फिर बहुत लोग क्या कहते हैं, कोई ना कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मिंत्रा वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह, ठीक है? सो दिस इज द थिंग. अभी तो आप लोग के पास में कोई दिक्कत ही नहीं है एक तरह से, अगर देखा जाए. रियल प्रॉब्लम तो तब जाकर के स्टार्ट होता है ना. See why I am making this particular statement, because I was also in that particular phase. I have faced now both the phases, ठीक है? मैंने दोनों फेज अब फेस कर लिए हैं. सो आई कैन डेफिनेटली कोरिलेट द थिंग्स कि कौन सा ऊपर है, कौन सा कम है, ठीक है? सो दिस इज द थिंग रिलेटेड टू इट. सो ट्रस्ट मी गाइस, अभी आप लोगों का गोल्डन फेज चल रहा है ना? और एक चीज हमेशा याद रखना, अपने वाई को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लो ना कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी भी आए, किसी भी टाइम पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सो योर वाई, दैट वाई सिविल सर्विसेज, वाई आईएएस शुड बी स्ट्रांग इनफ. बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए तुम लोग का वाई, ठीक है? कि क्यों बनना है आईएएस. ये अगर हो गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आराम से पढ़ाई भी कर लो. अब ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेटेजी नहीं पता है, ऐसा भी नहीं है कि बुक लिस्ट नहीं पता है, ठीक है? चीजें तो अब आपको सारी चीजें पता है, बस अब जरूरत क्या है, स्ट्रॉन्ग विल पावर की. यस जानवी.
Yes, sir. I was just thinking if you're free today, sir, I wanted to get on call with you. I wanted to talk about something. So if you're free, I could ask Sarita ma'am to like arrange a call. Will Definitely. that be fine, sir? So what time would you be then? After, between 5 to 5:30, because I'll have the class again after 5:30. All right, sir. Okay, sir. ठीक है, before 5:30 you can. Okay. चलिए, so be strong and हमेशा सोचते रहो कि क्यों आए हो इस चीज की प्रिपरेशन करने के लिए. ठीक है, चलो then let's discuss about the 7th 5-year plan. ओके, 6th सबको समझ में आ गया? 6th में किसी को कोई दिक्कत? 6th 5-year plan क्लियर हुआ सबका? बता दो, हाँ या ना तो कुछ बोल दो. चलो, then let's start with the 7th 5-year plan. Okay, so 7th 5-year plan came into picture in 1985 to 1990. Okay, so this is the time period. What is the target growth of the 7th 5-year plan? So the target growth was 5%. This was the target that we said. What was the actual growth that we achieved? So the actual growth was 6%. ठीक, हमने क्या चीज ये किया? हमने ज्यादा ही अचीव कर लिया था. ठीक है, so why we achieved the highest growth? ठीक है, हमने क्यों इतना ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ हमने क्यों अचीव किया था? What was the logic behind it? What was the thing that has come up, that has turned up during that particular time period, that we need to understand. वो अपने को समझना पड़ेगा. But before understanding that why we achieved higher than our target growth, okay, we need to understand that what was the aim, what was the objective, main objective actually of the 7th 5-year plan. हमारा main objective क्या था 7th 5-year plan का? Okay, so the main objective was agricultural production. ठीक, हमारा grain का production को बहुत ज्यादा improve करना है. That was the one of the objective. Okay, what was the another objective? Another objective was to develop the employment opportunities. ठीक, जो आज के टाइम पे we are not able to do that, we are not able to develop the employment opportunities, but during 1985 to 1990 we were having the target and we literally achieved. ठीक है, हमने literally में achieve कर लिया था, employment opportunities develop हो गया था. ठीक, so mainly target, basically if you look from the broader perspective, so the main target was centered around your agriculture. ठीक, वेरी गुड कांची, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक, तो देखो एग्रीकल्चर ये हमारा मेन टारगेट था. अब देख रहे हो ना, एग्रीकल्चर पे हम कब से फोकस किए हुए चले आ रहे हैं, बट स्टिल हु इज कंसीडर्ड एज द पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? सबसे ज्यादा पुअरेस्ट सेक्शन कौन है हमारे इंडिया में? फार्मर. How many of you want to become farmer in this world, in this country? इस देश में आप लोग में से कौन लोग बनना चाहोगे फार्मर? कोई है? किसी से भी आप पूछ करके देख लो, पूरे देश में दो चीजें हैं. कोई आज के टाइम पे फार्मर नहीं बनना चाहता है. ठीक है, तो ये तो दिस इज अ फैक्ट. ठीक, अच्छा इस चीज पे फार्मर पे so still farmers are very poor. But if you look at the occupation of the farmers, so 50%, around 50% of the Indian population are directly dependent on the agriculture sector. Okay, and what is the contribution of agriculture in the growth? GDP में growth contribution कितना है? 12%. ठीक है, मतलब देश का 12% हिस्से पे किसका कंट्रोल है? फार्मर्स का कंट्रोल है. लेकिन 50% लोग किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. मतलब 50 देश के 50% लोगों के पास कितने वेल्थ है? सिर्फ 12%. Now just this particular data, this particular fact clearly establishes the fact that why farmers are poor.
कि हमारे देश में फार्मर्स क्यों गरीब रहते हैं, but still see we are making the plan related to farmers development, since time immemorial, from 1951 to till now we are making the plans. The 50% population, Indian population, are directly dependent on the agriculture sector. But how far in the developmental process, what is the contribution of farmers? Agriculture का contribution कितना है GDP में? 12%. सिर्फ और सिर्फ 12%. मतलब 12% इनकम जो है ना, 12% वेल्थ जो है, उस पे किसका कंट्रोल है? वो किसके पास है? वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन के पास है. मतलब देख लो कितना कम है. Only 50% of the population only have 12% of the total wealth. और remaining wealth जो है किसके पास है? Remaining 50% है ना. हमारा 88% wealth किसके पास है? To non-farming community, remaining 50%. Those who are not from, those who belong to non-farming community. Isn't it? So this data clearly establishes that हमारे किसान क्यों गरीब हैं? Why they are very much poor, right? So this is the thing. लेकिन हम plan तो करते आए हैं, but in the 7-5-year plan ऐसा कुछ नहीं हुआ. हमने एग्रीकल्चर को टारगेट बनाया और एग्रीकल्चर हमारा फुलफिल हुआ. Why? क्यों हुआ? See, we fulfill our we fulfill actually our data, we fulfill our growth mainly because of rainfall. ठीक, कि हमारी अच्छी rainfall हुई थी. Always remember one thing: whenever there will be rainfall, good rainfall, okay, in that particular year, our GDP will grow. Why our GDP will grow? How GDP is related with the monsoon? है ना, ये देख रहे हो हमारा इकोनॉमी और ज्योग्राफी का मिलन हो रहा है अभी. How GDP is related with the monsoon? Because India is an agrarian economy. Okay, if and agriculture is definitely the more rainfall, the better agriculture is, right? So this is the thing. So if you are having the better productivity, if your products are growing, provided that you are having a safe thing, okay, to protect your crops. Okay, so if you have a good harvest in the season, so definitely the GDP will grow. Okay, so there was the good geographical condition. The geographical condition was suitable for the farming community. That's why in the 7-5-year plan, our rainfall was good. Our GDP grow actually, even though we set the target, but GDP grow there. Okay, so this is also one of the things related to it, and this is also one of the important perspectives. ठीक है, उस टाइम पे जो आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में अच्छे से कोट कर लेना इस चीज को कि मॉनसून वाज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच वी ग्रो प्रॉपर्ली. ठीक, व्हाट वाज द अनदर थिंग? दूसरी और चीजें क्या थी? दैट वाज आल्सो द टाइम ऑफ इसी सब एरा में तो हमारा चल रहा था ना, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का. सो इन दिस पर्टिकुलर एरा इटसेल्फ, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ईयर? So that was the era of Rajiv Gandhi. And Rajiv Gandhi was the prime minister after the assassination of Indira Gandhi. So Rajiv Gandhi became the prime minister. So he basically promoted the new technology like computers. कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कौन लेकर के आए? Who promoted all these concepts? किसने प्रमोट किया है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को? So it was the Rajiv Gandhi government who promoted all those things. It was Rajiv Gandhi who promoted to the concept of computer, mobile phone, and rest of that new technology. So technology clubbed with good monsoon, okay, helped India to prosper, helped India to grow. Okay, and there was no, और उस टाइम पे हमारा कोई वॉर भी हुआ नहीं था जिस वजह से कोई इशू रहे. ठीक, but in this particular 5-year plan, as we were, as the demand within the country was so high that we were not exporting,
rather what we used to do, we used to import the product from outside, है ना. डिमांड तो काफी हाई था, ठीक, हमारे डोमेस्टिकली डिमांड ही काफी ज्यादा हाई थे, तो हम एक्सपोर्ट तो हम कर नहीं पाते थे. वी यूज्ड टू इंपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, ठीक. सो हम ये जो हो पाता था, हम जो एक्सपोर्ट जो हम कर देते थे अलग अलग कंट्री में जाकर के, सो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, because of that particular issue, we faced the economic crisis. हमने कौन सी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस की थी? हमने फेस की थी बीओपी क्राइसिस after 1990. Why? Because we were not exporting, we were importing more. So India faced the balance BOP crisis from the south. It is what we call the balance of payment crisis. And what is balance of payment crisis? अभी इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, एलपीजी रिफॉर्म पढ़ाते टाइम इसको हम देखेंगे. या आफ्टर दैट, नॉट ड्यूरिंग कांची बट आफ्टर दैट, आफ्टर 7th 5-year प्लान, वहीं से शुरू तो वहीं से हो गया था ना. ऐसा तो नहीं है ना कि कल 7th 5-year प्लान खत्म हुआ और आज से बीओपी क्राइसिस स्टार्ट हुआ, तो ये पहले से ही होता है ना. वेरी गुड शुभ्रा. इट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, है ना. ये हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस है इकोनॉमिक क्राइसिस में. सो दिस इज द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट वी फेस्ड, दैट इंडिया फेस्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड. इस टाइम पीरियड में हमने ये बीओपी क्राइसिस फेस किया था. अब एक बात बताओ, in that particular BOP crisis we are not having money to feed our people, ठीक है. अब तो हम क्या करेंगे? We are in a crisis situation. So if we are in a crisis situation, so we have to deal with the crisis. So how can you think about making further plans? आप आगे प्लान बनाने के बारे में कैसे सोच सकते हो if you are facing the crisis presently? आप आज के समय में अगर क्राइसिस फेस कर रहे हो, आज के टाइम पे अगर आपको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, then how you can think of helping the thing or making the plans. So for that particular reason, from 1990 to 1992 there was plan holiday. Now Sahiti, you please tell me what do you understand by plan holiday? So instead of 5-year plans, we follow annual plans. Very good. So the absence of 5-year plan is called as plan holiday. Okay. So from 1990 to 1992 there was plan holiday. Why? Because of the BOP crisis. ठीक, ये BOP crisis की वजह से अपना क्या हो गया था? प्लान हॉलीडेज हो गया था. कोई प्लान ही हम फॉलो नहीं कर रहे. डोंट वरी अबाउट BOP crisis. We will discuss this separately, है ना. अपने को एक्सटर्नल, in the external commercial borrowings I will discuss about the BOP crisis. So don't worry about it guys. हमारा LPG रिफॉर्म करके एक चैप्टर ही है जहाँ पे अपने को ये सारी चीजें डिस्कस करनी है. ठीक. So there was annual plan during that particular time period. Okay. Then comes our 8th 5-year plan. 8th 5-year plan is very important and is very significant. Okay, 8th 5-year plan was from 1992 to 1997. It was a very significant plan. बहुत ही significant plan. Which type of plan started from this particular 5-year plan? Indicative. Very good. What is in the indicative planning? Mixed economy. Absolutely. So India has the mixed economic model. अपने हम लोगों ने क्या किया था? Mixed economic model फेस किया था. So due to BOP crisis, what India did? India reformed. India brought the reform in the economic structure of the country that has a larger impact. आज के टाइम पे इंडिया जो ग्रो किया है, it was because of this, because of LPG reform. So what India did? India come up with the concept of liberalization, privatization and ग्लोबलाइजेशन. ये तीनों चीज हम पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे, आज नहीं बाद में हम पढ़ेंगे, बट वी विल डिस्कस दिस थिंग्स. हमें तीनों का एक एक का मतलब भी समझना है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना. सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टूड.
Okay, so India come up with the concept of LPG reform. This is famously known as LPG reform. इसको हम बोलते हैं. So it was an economic policy, okay, that come up with the LPG reform. हमने ये कर दिया था. So India suddenly moved from closed economic model to open economic model in the 8th 5-year plan. Okay, that was the main agenda. Indian government simply liberalized the economy, simply opened. Initially, our economy was very much closed. ठीक है, पूरा हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, लेकिन हमने इसको क्या किया था 8th 5-year plan में जाकर के, in our 8th 5-year plan we simply open up our economy. So that was the main thing that happened. So 8th 5-year plan is also called as, it is also known as Rao Manmohan model. Okay, PV Narasimha Rao was the prime minister during that time. Manmohan Singh was the finance minister during that time. Okay, that's why 8th 5-year plan is also called as Rao Manmohan model. Is this clear? बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? चलो फिर. Then let's discuss about the 9th 5-year plan. What is in the 9th 5-year plan? So the target set for the 9th 5-year plan was 6.5%. और यहाँ से आप याद रखना that from 8th 5-year plan indicative planning started. याद रखना important है वो. Okay, growth हमने कितना किया? 5.4%. ठीक, why? क्यों हमने ग्रोथ की? हमने टारगेट तो सेट ज्यादा किया था, फिर हमारा ग्रोथ कम क्यों हुआ? बताइए. Definitely. So due to, see, there were various reasons. It was not the only reason, but there were various reasons. So in this particular time period, there was the political instability. First thing, what was the another thing? India achieved one great success during 9th 5-year plan. ठीक है, इंडिया ने एक बहुत ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट लिया था. इंडिया became nuclear state in this particular 5-year plan. ठीक, and as India became the nuclear state, so the ban was imposed. International ban was imposed on India. US ने हमारे ऊपर क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था. याद है आप लोगों को? So nuclear, जैसे इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया, ठीक, we did a wonderful job. आप लोगों ने मूवी देखी है पोखरण, जॉन अब्राहम की? देखिए, नहीं देखिए? अच्छा, पोखरण करके एक मूवी है जॉन अब्राहम की, देख लेना, इसी चीज पे बनी है. सो एज इंडिया बिकेम द न्यूक्लियर स्टेट, सो बैन वाज इम्पोज्ड. ठीक, यूएस आए भाई साहब, और यूएस ने आकर के इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल बैन लगा दिया. सी, इंटरनेशनल बैन लगाना मतलब क्या? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बैनिंग एनी पर्टिकुलर कंट्री? इंटरनेशनल बैन लगाना मतलब यूएस अगर बैन लगाता है, दैट मींस यू कैन नॉट यूज यूएस डॉलर. इट इज नॉट अबाउट ट्रेड, it is about trade. तो obviously बात नहीं होगा. You cannot use US dollar for trade purposes. Okay, if you will not use US dollar, that means what? You cannot do the trade with other countries also, because other countries also demand that dollar, US dollar, especially for their commercial purposes, isn't it? So that means what? You will be limited within yourself. And prior to 9th 5-year plan, in the 8th 5-year plan, we liberalized our economy. है ना? कुछ टाइम पहले ही तो हम क्लोज्ड से ओपन हुए थे, बट फिर से हम क्या हो गए? क्लोज्ड हो गए. हमें हमारे ऊपर बैन लगा दिया गया था. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. सो यू नो, वी फोकस्ड आवर अटेंशन मोर ऑन डेवलपिंग सोशल सेक्टर्स. ठीक, हमने सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट पे, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, राइट. सो वी फोकस्ड आवर अटेंशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ such type of things. ठीक, इन लोगों पे हमने अपना फोकस किया था. ठीक है, so this was the thing. And you know, for the first time in the history of Indian polity and society and economy, we talked about social justice. है ना? हमने पहली बार सोशल जस्टिस के बारे में बात की थी. And what do you understand by social justice? Social justice is about
helping you to get your own right. आपको help करना, आपको empower करना, so that you can ask for your rights. So that is what we call social justice. Okay, so for the first time, India, talked about the social justice, for giving social justice to all. Because remember this particular thing, guys, that the 9th 5-year plan was more or less about the society or the social transformation. Okay, the government focused more on the development of an individual. हर इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे इन द 9th 5-year plan. ये याद रखना आप लोग. Then comes our 10th 5-year plan. हमारा 10th 5-year plan कब से कब तक का था? Our 10th 5-year plan was from 2002 to 2007. Target growth था 8%, actual growth was 7.6%. ठीक, because of see during this particular thing ना, ये टाइम पीरियड में आकर के we change little bit, we again come up with, हमारी गवर्नमेंट आई थी, it was the era of UPA 1. ठीक, ये UPA 1 का era था इस टाइम पे. Okay, and we wanted to develop ourselves, we wanted to grow. Okay, हम develop करना चाहते थे, grow करना चाहते थे. So for that reason, the government expenditure increased. In this particular 5-year plan itself, we come up with the concept of MG Narega. MG Narega को लेकर के आए थे हम इसी 5-year plan में. ठीक है, in our 10th 5-year plan only. Okay, what was our main target? Our main target was to improve the literacy rate, to go for the social thing, to provide all the basic amenities. No, the government in this particular thing, in this particular UPA 1, okay, wanted to develop the social infrastructure. ठीक है, 10th 5-year plan में गवर्नमेंट क्या चाहती थी? गवर्नमेंट चाहती थी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो जाए. That was the main agenda, that was the main objective of the government. To improve the social infrastructure, government also wanted to reduce the infant and maternal mortality rate. Do you guys aware about the maternal and infant mortality rate? क्या होता है ये? बताओ. पता है ना सबको? चलो. So the government basically focused on developing the social infrastructure during this particular 10th 5-year plan. बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ नोट्स में मेंशन कर ही दी है, उतना भी कुछ खास नहीं है, तो आप एक बार पढ़ लेना. That will be helpful for you guys. ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. यहाँ पे एक चीज बस आपको ये याद रखना है कि 10th 5-year plan में the main focus was on developing social infrastructure. ठीक, ठीक है, ये चीज था. टारगेट 6.7%, that was the target, main target. Okay, in this particular time period, in this particular thing, we were very much close. Shubhra, we were very much close. Okay, so everything was going good, but the thing is what, हमारे पास बैन भी था लगा हुआ इंडिया के ऊपर, है ना? और we were, during that particular time we changed our policy, and when we changed our policy, तो उस टाइम पे आकर के थोड़ी सी दिक्कत होती है. The capital was flowing in. Okay, capital तो आ रहा था, but this was the thing, we were very much close in achieving our target. Then yeah, yes Kanchi. So what was the target of 8th 5-year plan? I told you 6.7%. 8th? Yeah, 8th. Okay. And sir, could you explain once that open and closed economy? Actually, I just forgot. No issue, no issue. Open economy is that type of economy where there will be free movement of goods and services. Okay, where export and import will take place without any prejudice, without any biasedness. So that is what we call open economy. Closed economy is that type of economy where you will not allow the foreign players or the private players to entertain or to do business. Take in the country where there will be lot of restrictions, बहुत सारे restrictions रहेंगे. So that type, if there is too much of restriction, that type of economy is called as closed economy. If you do not have that much restriction, if you are allowed, if you are free to do some sort of things, or whatever legally you can do, that particular type, you can go for export import. That is what we call open economy.
चलो, so then we have 11th 5-year plan. See, 11th 5-year plan was from 2007 to 12. ठीक, ये हमारा था. That was again the era of UPA 2. ये हमारे UPA 2 के टाइम पे आया था. UPA 1 and UPA 2, है ना, मतलब कांग्रेस की सरकार थी. Okay, target was 9%. Actual growth that what we achieved was 8%. ठीक, टारगेट तो हमने 9 का सेट किया था. एक्चुअल ग्रोथ हमने अचीव किया 8. You know why? Okay, so first of all, let's discuss what was the main thing, what was the main objective. So the main objective of 11th 5-year plan was more, faster and more inclusive growth. Okay, so for the first time we talked about inclusive growth. What is inclusive growth, by the way? Inclusive growth से क्या समझते हो? देखो, inclusive growth is about including the weaker sections of the society in the developmental process. Definitely including all, especially the weaker sections of the society in the developmental process. ठीक है, इसको हम बोलते हैं inclusive growth. Okay, financial inclusion क्या होता है? Including weaker sections of the society in the financial activities like बैंक के साथ, insurance sector के साथ, not economically weaker. All the weaker sections, all the downtrodden. किसको हम बोलते हैं? Downtrodden, SC, ST, OBC, women, children, elderlies. They comes under the weaker sections. Weaker section हम इनको क्यों बोलते हैं? Because they are prone to attack. इन पे easily से attack हो जाता है, करते हैं लोग. ठीक, that's why they are considered this particular thing. ये सारी चीजें आप इंडियन सोसाइटी की क्लास में भी पढ़ोगे. Okay, so the main objective of 11th 5-year plan was inclusive growth. ठीक है, या vulnerable sections that we say. ठीक है, तो inclusive growth था हमारा main objective. Why we face the challenge? We face the challenge because why we did not achieve the target? It was mainly because of global financial crisis. क्यों आया, किस वजह से आया? Again a separate topic. Global financial crisis that we faced in the year 2008. ठीक, इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल किया था. ठीक है, सो ये सारी चीजें जब हम देखेंगे आपको मजा आ जाएगा कि वाओ, कितनी अच्छी इकोनॉमी थी उस टाइम पे हमारी. ठीक है, सो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वी डिड नॉट अचीव द टारगेट, बट यस इट वाज अ वंडरफुल टाइम पीरियड फॉर द इंडियन इकोनॉमी, है ना. हमारे लिए वंडरफुल टाइम पीरियड था ये हमारे लिए. ठीक है, बहुत बूस्ट हुआ हमारा इकोनॉमी. 11th 5-year plan. 12th 5-year plan, the 12th 5-year plan was हमारा ये था, थोड़ा चेंज हो गया था. In the 12th 5-year plan the main objective was faster, sustainable and more inclusive growth. Okay, that was the thing related to our 12th 5-year plan. हमारा क्या था? Faster, sustainable and more inclusive growth. That was the main thing. ठीक, इसका टारगेट कितना था ये मैं आपको कल बता दूंगा. Tomorrow I will tell you about the target and what was the thing that we achieved. ठीक, but this was the main objective of our 12th 5-year plan. याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है that what was the main objective of 12th 5-year plan. So the main objective of 12th 5-year plan was faster, sustainable and more inclusive growth. ठीक है, sustainable मतलब क्या होता है? So आप लोग को पीपीटी नहीं मिला है? मैम से आप एक बार बोल देना. ठीक है, मिल चुका होगा. ठीक है, सो देखो, तो सस्टेनेबल मतलब होता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए चीजों को बचा के रखना. ठीक, सो वो था मेन चीज है. बाकी आप इसमें पढ़ लोगे एक बार में क्लियर हो जाएगा. So after 2017 there was the change in the regime. ठीक, यहां तक अपना चल रहा था 5-year plan. इसके बाद अपना क्या हुआ है? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई in the year 2014 and the Narendra Modi government scrapped and discontinued with the process 5-year plan. Now we have long-term plan. ठीक, हमारे पास है अब long-term plan. What is the main objective of the long-term plan? The main objective of long-term plan, first objective is doubling farmers' income by 2022. Okay, that is the main objective. Another long-term plan is to go for the digital India.
ठीक, ये डिजिटल इंडिया है। देन वी हैव द लॉन्ग टर्म प्लान फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। Okay, so these three are the, then smart city, overall infrastructure development. Okay, these are the 4 main objective of long term plan. ठीक, और ये long term plan क्या है? 2030 तक। This long term plan is till 2030. Okay, so ये government of India, now after 12th 5-year plan, there was a change in the government. Narendra Modi government come up and he simply discontinued with the 5-year plan. Okay, and he has started the long-term plan where these are the targets. All right, and on this note, yes, 2030, absolutely correct, Kanchi. So on this note, we have completed our planning process in India. समझ में आया? Sustainable development is regarding using any activity considering future generation in mind, है ना? जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा कुछ भी खर्च नहीं करना है। पानी है, पानी आप उतना ही यूज करो जितना आपके लिए जरूरत हो। आप एक्स्ट्रा यूज करोगे तो आगे वाली जनरेशन यूज नहीं कर पाएगी। ठीक, so this is the thing related to it. Clear? So is the 5-year plan clear to all? समझ में आया सबको? Planning process in India, we are done with it. We have completed. Okay. From now onwards, from in our next class, see, institutions and organizations पे PPT अभी नहीं मिलेगी, वो तो अभी तक क्लास भी नहीं हुई है शुभ्रा, है ना? और नेशनल इनकम वाली जो PPT है वो आप एक बार मैम से बात कर लेना, ठीक है? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस और वो क्या इंडेक्स जो रिलीज करते हैं वो मैं आपको बाद में, वो आप ये आने तो दो, आपके प्रीलिम्स से पहले भिजवा दूंगा, ठीक है? दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इकोनॉमी, दैट इज रिलेटेड टू जेंडर। मैं एक बार ये बनवाता हूं उससे और वो फिर मैं आपको भिजवा दूंगा। ओके, चलो देन, ऑलराइट देन, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन्फ्लेशन। ठीक, यहीं पे सत्यनारायण भगवान की कथा को समाप्त करते हैं। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी लॉन्ग टॉपिक, है ना? चलिए, ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए और चीजों को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू ऑल। या डेफिनेटली आई विल चेक योर आंसर्स एंड बाय सैटरडे आई विल गेट बैक टू यू। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, है ना? सैटरडे तक आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।